फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संकल्प ट्यूटोरियल्स एजुकेशनल वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन 12th स्टैंडर्ड देयर इज अ टॉपिक which is having a very good weightage considering both JEE exams and NEET. So we will be discussing the coordination compound. The very first point you should know about coordination compound, what does it mean? आप जानते हो कि आयोनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, देन कोवैलेंट कंपाउंड का मतलब क्या होता है. सो देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ द कंपाउंड टू विच वी से एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सो इफ आई से कि मेरे पास कंपाउंड है कोबाल्ट क्लोराइड, आई एम निग्लेक्टिंग दिस अमोनियम पार्ट ऑफ इट. अगर मैं बोलता हूं मेरे पास कंपाउंड है कोबाल्ट क्लोराइड, सो आई नो दैट इन कोबाल्ट क्लोराइड इफ आई राइट फॉर्मूला एज COCl3, so this cobalt is binding with the 3 chloride atom. So in that case, if I want to say that how many chlorides are linked directly with the cobalt, so as it is written by 3, so it's a 3 chloride atom, and from that हम बोल सकते हैं कि definitely the cobalt must be requiring 3 electrons, that is why it is binding with the 3 chlorine atom. But sometime हमको कुछ ऐसे compound मिलते हैं जिसमें as you see over here we are writing even ammonium along with the chloride. So what to say this compound or how to call this compound, that we are going to see in this topic. So if we look at a broad category of the element of the D block, the transition metal, from a large number of complex compounds in which the metal atom, so as you see over here, cobalt is a transition metal. So this cobalt is forming a complex. Why we are saying as a complex? Because it is binding with ammonium also, it is binding with chloride also. So it form a complex compound in which the metal atom, you can see that cobalt is bound to number of anions or a neutral molecule. तो एक तो वो anion को bound करेगा या फिर वो neutral molecule को bound करेगा. And while binding with anion or the neutral molecule, it do so by sharing of the electron. Such compounds are called as coordination compound. तो ऐसे कोई भी compound जिसमें transition metal present है और अगर वो किसी और you can say element से bind हो रहा है और ion या फिर वो molecule भी हो सकता है, while binding वो अगर sharing of electron करता है, तो वैसे सभी compound को we have to call as coordination compound. Next to that, there was a scientist named Alfred Werner who has given a theory for the coordination compound. जैसे कि हम क्लोरोफिल पिगमेंट देखते हैं, हीमोग्लोबिन, so these are also a type of coordination compound. So Werner was the first who has given the theory for the coordination compound. जैसे मैंने आपको बोला था कि if I take the example of chromium chloride, so I know that this is a binary compound where chromium is binding with 3 chlorine atom. If I say cobalt chloride COCl2, so cobalt is binding with again 2 chlorine atom. Palladium chloride, so palladium is binding with 2 chlorine atom. So here if I have to look at what is a valency, so for chromium it's coming as 3, for cobalt it's 2, for palladium it's 2. So binary compounds such as you can say chromium chloride, cobalt chloride, palladium chloride satisfy the primary valency as a 3, 2, 2 respectively. So Werner has proposed the concept of secondary valency also for the metal. So this primary valency everyone knows, but Werner ने एक नया concept दिया था, that is secondary valency. So let's look at what does this secondary valency means. So to explain the concept of secondary valency, Werner ने कुछ experiment perform किए. तो हम वन बाय वन वो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने वाले हैं. सो इन सीरीज ऑफ अ कंपाउंड ऑफ द कोबाल्ट 3 क्लोराइड, तो उसने कोबाल्ट 3 क्लोराइड के कुछ कंपाउंड्स कंसीडर किए. सो if I say the first compound is COCl3 6NH3, second compound COCl3 5NH3, third compound COCl3 4NH3, and last compound COCl3 4, you can say as NH3, but you can find कि color different है. सो हम वन बाय वन इसका हर माइन्यूट एस्पेक्ट देखने वाले हैं कि वाई इट इज सो. तो यहाँ पर आपको कंपाउंड का ये जो मिल रहा है दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सिर्फ 5 अमोनियम हमने लिखे हैं. दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इवन दो आर सेम, बट उनका कलर डिफरेंट है. तो ऐसा कलर डिफरेंस क्यों दिख रहा है? सो जब वर्नर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इन द सीरीज ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कोबाल्ट 3 क्लोराइड विद अमोनिया, it was found that some of the chloride ion could be precipitated. So कुछ chloride ions, compounds के कुछ chloride ions ऐसे थे जिनका रिएक्शन हो सकता था विथ
यू कैन से AgNO3। तो जब हम उसमें AgNO3 ऐड कर रहे थे तो AgNO3 के साथ रिएक्ट होने के बाद देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट ऑफ द AgCl। सो व्हाट डज इट मीन, लेट्स लुक एट। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास कोई कंपाउंड है एज अ XCl, अभी ये XCl कंपाउंड का जब हम रिएक्शन करते हैं विथ AgNO3, सो इट्स अ टाइप ऑफ अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। सो जब XCl AgNO3 के साथ रिएक्ट होता है तो आफ्टर दैट रिएक्शन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ AgCl एंड XNO3। और ये जो AgCl है दैट इज स्पैरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, एंड एज इट इज स्पैरिंगली सोल्यूबल इन वाटर तो उसका प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा। तो वर्नर ने जो भी कंपाउंड लिए थे उन सभी कंपाउंड में क्लोराइड प्रेजेंट था। तो जब आप उसमें AgNO3 ऐड कर रहे थे सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 फॉर्मिंग वाज डिफरेंट। अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 फॉर्मिंग विल बी डिफरेंट। ऐसा कब हो सकता है, व्हेन वी से कि उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ क्लोराइड आइटम्स प्रेजेंट है। तो अगर मैं 1 मोल COCl3 6NH3 यूज करता हूं तो मुझे 3 मोल AgNO3 के मिलते हैं। सिमिलर वे इफ आई एम यूजिंग 1 मोल COCl3 5NH3 तो मुझे सिर्फ 2 मोल AgCl मिल रहा है। If I say I am taking the compound as a COCl3 4NH3, so I will get 1 mole of AgCl. And if I take COCl3 4NH3, I will again get 1 mole of AgCl. So in both this case, I am getting 1 mole of AgCl. The color is different because हम isomerism का concept आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस पे से वर्नर ने कंक्लूजन यह निकाला कि जो Cl आयंस थे इन केस नंबर 1, 3 chloride ions were free to form, you can say, bond with AgNO3 solution. So he has considered that the entire coordination compound can be divided into two parts. One part will be called as a complex, one part will be called as a, you can say, coordination sphere or complex ion, while the other part will be considered as a counter ion. सो जो प्रिसिपिटेट होकर बाहर निकलता है उसको टर्म था काउंटर आयन, वाइल जो प्रिसिपिटेट नहीं हो सकता है, जो अपना अंदर का पार्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होने देगा, दैट विल बी कंसिडर एज अ कोऑर्डिनेशन स्पीयर और कॉम्प्लेक्स आयन। सो यू कैन सी कि ये केस नंबर 1 में CONH3/6 3+ और ये 3Cl बाहर लिखा, इट मींस ये जो क्लोराइड थे दैट कैन टेक पार्ट इन रिएक्शन। दिस इज नॉट द वे ऑफ राइटिंग द स्ट्रक्चर दैट वी विल सी नेक्स्ट इन अ नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर COCl NH3/5 लिखा है, मतलब ये जो Cl है वो कहीं पर भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा when it reacts with AgNO3. In this case, these two Cl will not take part. That is why you are getting only 1 mole of AgCl. So now let's look at how this structure will look like. So अगर मैं बोलता हूं कि पहले कंपाउंड का स्ट्रक्चर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं, CONH3/6 3Cl minus. So definitely these 3Cl will be the one which can react with AgNO3 solution. If I say second compound COCl NH3/5 2Cl minus, so these are the 2Cl which will take part with the reaction when we consider AgNO3 as a titrant. Now in next case, if I say COCl2 NH3/4, so only this Cl will take part in a reaction with AgNO3. Again in last case, only this Cl will take part in the reaction with AgNO3. So भले ही यहाँ पर Cl प्रेजेंट है बट वो Cl कोऑर्डिनेशन स्पीयर के अंदर है, दैट इज वाई वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। सो इस तरीके से यू कैन से द स्ट्रक्चर विल लुक लाइक। और ये सभी कंपाउंड का डिफरेंट कलर होता है, दैट कलर एस्पेक्ट वी विल सी एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक। सो यहाँ पर जब हम इस पर्टिकुलर कंपाउंड का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर लिखना चाहते हैं तो वी विल राइट एज अ CONH3/6 Cl/3। हम कभी भी Cl3+ ये अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है और 3Cl माइनस ऐसा लिखा है, बट एक्चुअल में आप ये पूरा स्ट्रक्चर जब लिखोगे CONH3/6 ब्रैकेट क्लोज Cl/3 ऐसा लिखना है। तो इस कंपाउंड को जब हम वाटर में डालते हैं तो देयर बी फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ दिस CONH3/6 3+ एंड 3 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन। सो जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उस सॉल्यूशन में हमको टोटल 4 आयन दिखेंगे, एक आयन रहेगा कॉम्प्लेक्स आयन और 3 रहेंगे क्लोराइड आयन। वाइल इन केस नंबर 2 हमको टोटल 3 आयन्स मिलेंगे, 1 विल बी कॉम्प्लेक्स आयन and 2 will be chloride ion. In case number 3 we will find 1 as a complex ion and 1 as a chloride ion. Same is for case number 4.
सो जब ये सॉल्यूशन का हम कंडक्टिविटी देखते हैं, सो कंडक्टिविटी विल बी बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ आयंस विच आर जनरेटेड. So the solution of very first compound will show highest conductivity while the solution of last compound will show a lowest conductivity. So Werner even carried out the experiment of conductivity to prove the structure of these coordination compounds. So in coordination compound, metal shows two type of linkage, or we can say two type of valencies. The first valency we say as a primary valency. This primary valency, as we have seen the structure of cobalt ammonium chloride, so in that chloride ion which were getting ionized will be considered that they are satisfying the primary valency. और ये primary valency हमेशा हम consider करते हैं कि mostly will be because of negative ions. The secondary valence are non-ionizable, मतलब जो sphere के अंदर है, जो chloride ion reaction में participate नहीं कर रहे थे, जो अमोनियम आयन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, दे ऑल विल बी कंसिडर एज अ सेकेंडरी वैलेंस. और ये जो सेकेंडरी वैलेंस होता है वो एक तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल रहेगा लाइक अमोनिया, और इट कैन बी निगेटिव आयन एज वी हैव सीन इन अ केस ऑफ क्लोराइड. और ये जो सेकेंडरी वैलेंस होता है वो एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर को जस्टिफाई करता है. द सेकेंडरी वैलेंस इज इक्वल्स टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स फॉर द मेटल. सो इफ आई से कि जैसे हमने प्रीवियस सभी केसेस देखे थे, इन एवरी केस दिस कोबाल्ट is having 6, you can say, molecule around it or ion and molecule taken together around it. जैसे यहाँ पे CONH3/6 मतलब कोबाल्ट 6 अमोनिया से लिंक है डायरेक्टली. यहाँ पे CO1Cl and 5 अमोनिया, सो अगेन 6 से लिंक है. कोबाल्ट 2 क्लोराइड and 4 अमोनिया, अगेन इट इज लिंक विद 6 moieties. Cobalt 2 chloride and 4 ammonia, so again it is linked with a 6, you can say, taken together ion and a molecule. So in every case cobalt is linked with a 6 associated ions or a molecule. So coordination number for the cobalt can be considered as a 6 and it will always be fixed for that particular metal. So coordination number जो है वो change नहीं होता है. The ion or group bound by secondary linkage to a metal have a characteristic spatial arrangement corresponding to different coordination number. तो जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि Cl ammonia, so when they arrange, they may arrange as a cis or trans. So based on that we will see the isomerism in the upcoming lectures. So this is about Werner's postulate about the coordination compounds. So आइए हम ट्राई करते हैं कुछ सम सॉल्व करने का बेस्ड ऑन दी, यू कैन से, क्वेश्चंस व्हिच हैज कम इन द प्रीवियस ईयर एग्जाम्स. सो 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है CONH3 5Cl3. जब इस कंपाउंड को हमने ट्रीट किया, इट गिव्स 3 मोल्स ऑफ आयंस ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर. तो इस कंपाउंड को वाटर में ऐड करने के बाद 3 आयंस जनरेट हुए. 1 मोल ऑफ सेम कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ AgNO3. तो जब इस कंपाउंड का हम 1 मोल लेते हैं तो वो 2 AgNO3 से रिएक्ट होता है. सो एज आई सेड कि जब भी कोई कंपाउंड आपको रिएक्शन के बाद, मींस व्हेन इट रिएक्ट्स विद AgNO3 और आपको 2 मोल AgCl दे रहा है, और इफ इट इज रिएक्टिंग विद 2 मोल ऑफ AgNO3, इट मींस उसके 2 क्लोराइड आयन हमेशा स्पीयर के बाहर है, मींस इट्स फॉर्मिंग द प्राइमरी वैलेंसी. सो अगर आप ये ऑप्शंस देखते हो तो हियर यू विल फाइंड कि एक ही क्लोराइड बाहर है, तो यहाँ तो एक ही AgCl बनना चाहिए. यहाँ पर कोई AgCl नहीं बनेगा. इन दिस केस 2 AgCl कैन फॉर्म एंड अगेन इन दिस केस 2 AgCl फॉर्म. सो योर आंसर कैन बी C, इट कैन बी D. बट यहाँ पर और एक इंफॉर्मेशन दिया है कि जब हम इस कॉम्प्लेक्स को वाटर में ऐड करते हैं तो टोटल 3 मोल्स ऑफ आयन विल जनरेट. So as it is said कि 3 moles of ions will generate, it indicate कि total ions which will generate in a solution should not be more than 3. तो यहाँ पर अगर हम काउंट करते हैं तो एक आयन तो हो जाएगा ये कोऑर्डिनेशन स्पीयर का, 2Cl and 1 ammonium, so 1 plus 2 3 and 4 ions. But here if I say there will be formation of 1 ion as a CONH3 by 5, Cl as a 1 and 2Cl. So your answer should be ideally D. So this is how you can solve the problem based on the given data of this type. Next, when AgNO3 is added to the solution of CONH3 by 5Cl3, the precipitate of, we can say, AgCl shows 2 ionizable chloride ions. तो जब हमने इस कंपाउंड
की रिएक्शन की AgNO3 के साथ, तो हमको मिला कि उसमें 2 आयोनाइजेबल क्लोराइड आयंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 क्लोराइड आयन सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी। सो ऑब्वियसली अगर 2 क्लोराइड प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हो तो ही हमको 2 AgCl मिलेंगे, और जो थर्ड क्लोराइड है वो सेकेंडरी वैलेंसी में होना चाहिए बिकॉज इट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। So answer A is looking correct. But let's check the other answer. One chloride atom satisfy primary as well as secondary valency. So ऐसा तो कभी नहीं होता है कि एक ही आयन दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई करे। 3 क्लोरीन एटम सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी। अगर 3 प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते तो क्या होता कि 3 AgCl मॉलिक्यूल प्रिसिपिटेट आउट होते। 3 क्लोरीन एटम सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसी, अगर ऐसा होता तो देयर विल नॉट बी फॉर्मेशन ऑफ AgCl. So we can say the correct statement in this particular case is A. Next, which one is the most likely structure of COCl3 6NH3 if 1/3 of total chlorine compound is precipitated by adding AgNO3? So हमारे पास कंपाउंड है CrCl3 6 वाटर। सो इसमें से जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं AgNO3 के साथ तो ओनली 1/3 ऑफ क्लोरीन एटम प्रिसिपिटेट होते हैं। सो टोटल क्लोरीन एटम हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 3 है, 1/3 प्रिसिपिटेट हो रहे हैं, मतलब एक ही क्लोरीन एटम प्रिसिपिटेट आउट हो रहा है। इट इंडिकेट कि ओनली 1 क्लोरीन एटम शुड बी प्रेजेंट एज अ प्राइमरी वैलेंसी। सो यू कैन सी that in first structure it doesn't satisfy, second structure में सिर्फ water molecule बाहर है। In this structure you can see that there is 1 chlorine atom, it's a printing mistake or typing mistake. So C will be your answer because in D also there are 2 chlorine atom which are coming in a primary valency. So here CrCl2 H2O by 4 Cl dot H2O will be the structure of your compound. So this is how you can solve the different type of sums which comes normally in JEE or you can say in advanced exam, even in the NEET, based on this particular concept. So thank you for watching my video. If you like it, please share it with your friends. Subscribe my channel if you are new with it. Thank you once again.